सबको मिल गया होगा अब तक। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि ठीक 22 साल पहले जून 2001 को, ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। हाई कोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में और अभी जला रहा है 2023 में। जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री व्यस्त थे कर्नाटक के चुनाव में। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तनाव है, हिंसा है, अशांति है, पर इनको कोई परवाह नहीं था। तब से हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आज मैं हमारे मणिपुर के वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें कि क्या हमारी मांग है। हम जानते हैं कि आज गृह मंत्री इम्फाल में है, मणिपुर में है, कल रात को इम्फाल गए थे और आज और कल वहां रहेंगे। उसके बारे में भी हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर इबोबी सिंह जी आपको कुछ बताएंगे। पर जो मेमोरेंडम आपके पास है, जो हमारे अध्यक्ष खरगे जी ने राष्ट्रपति को आज सुबह सौंपा था, उसमें आप देखेंगे 12 पॉइंट है, 12 बिंदु हैं। ये एक 12 पॉइंट का एक्शन प्लान है कांग्रेस पार्टी की ओर से, ताकि फिर से मणिपुर में शांति, सद्भावना वापस लौट आए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि 2001 के हिंसा की घटना के बाद फरवरी 2002 में इबोबी सिंह जी मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसी घटनाएं नहीं हुई। विकास का रास्ता, सद्भावना का रास्ता मणिपुर का रास्ता था। आज वो सब जल रहा है और इसके बारे में इबोबी सिंह जी पहले, बाद में गैखानगाम जी, उसके बाद में हमारे पीसीसी अध्यक्ष मेघा चंद्र सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। इबोबी सिंह जी। Friends from media, both electronic and print media, respected Jairam Ramesh ji, our PCC President Shri Megha Chandra Singh, our former Deputy Chief Minister of Manipur, Shri Gaikhangam ji, now he is a steering committee member of the Congress Working Committee, MLA Surya Kumar, and Congress senior leader, former Speaker Shri T.S. Lokeshwar Singh, and our PCC Vice President Hareshwar Sharma. As you are all well aware, a brief about Manipur incident Jairamji has explained before you. What we are quite surprised. It has never happened
in the history of Manipur, not only in the history of Manipur, the entire country, that is India, anywhere in the state, what is happening in India may not be happen, I don't think. As Jairamji already said, this incident, this unfortunate incident has begun last 3rd May. How many people has been died? It is most unfortunate, a rare incident. 2 communities, that is Maitai communities and so-called Kuki communities. I don't know what is the hidden agenda of both the state government as well as Center Shri Narendra Modi's government. Complete nearly 1 month, there is absolutely no stop at all. Still is firing took place. Today in the early morning, I am told, it is reported, 2 people was killed. The dead body, officially they claim, the state government has claimed, without yesterday and today's death, they claim 74 without missing person. Only dead body where they found, all those dead body also, still most of the dead body, they are not trying to identify it, and they are not trying to hand over to the next kin of their family member. You people all knows it has never happened anywhere in the state of Manipur. What is happening today in Manipur, if it is happened somewhere in other state, the India will be burned. But I don't know what is their intention, whether they thought it is a small state, let them kill each other. Kya karega? Let them die each other. They maybe thought that this is my consumption is that people of Manipur, how much they are underestimate, just like element, killing of element. Only yesterday, as Jairamji already mentioned, exact incident was took place, began from 3rd May. We thought that they may be busy for campaigning in Karnataka till 10th May. Immediate after 10 May, we thought that they may be rushed to Manipur. They may be immediately, they will be immediately interfered there. But till yesterday, only yesterday, Honorable Home Minister Amit Shahji rushed to Delhi. That is also in the evening, he came to Manipur. I don't know, this is what is their hidden agenda, secret agenda of this BJP government, both center and state. We don't know. Do whatever they like, but at least we would like to appeal, save people of Manipur. As Jairamji already mentioned, in 2001, there is unfortunate incident took place in Manipur when Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister, L.K. Advani was Deputy Prime Minister, who is in charge of Home. There is ceasefire, peace talk between Naga insurgent group and the Government of India. By that time, if there is any agreement or ceasefire, peace talk agreement is there must be one ground rule. In that ground rule, they specifically mention this ceasefire, peace talk should be confined only in Nagaland state only. But immediate after amendment of that ground rule, it should be original ground rule, it should be confined only within Nagaland, but when they further amended without territorial limit.
So people of Manipur, what they feel that Manipur integrity was break. So suddenly people are aroused and people are stood up and they started torch all the assembly building, all ministers, chief ministers building. That is another, but human precious life, 21 people was killed. Then immediately they withdraw that further amendment of that ground rule. So, in 2001, that is June uprising. But now again, this is May, after 21 years, it is happened again. So see, we thought that if they are collected, including those missing persons, it may be cross more than 100 people also. Now what is happening there at present, both the communities who are displaced their family, around more than 2,000 houses, both hill and the valley, both the communities' houses, more than 2,000 houses has already totally gutted down and burned down. Those people who are staying earlier in their respective house, they are taking shelter more than different relief camp, including women, including childs, without any supplying from the government side, essential communities. Those local area clubs, civil society organization, they are donation, some of them they are donation, and some of them they are collected, so they are arranging those horrible relief camp. They thought that it's just like let them die, what they can do. This is most unfortunate. Being a citizen of this country, we can't stay there. So if they don't listen, you see, India is a democratic country. India's president is supreme commander of this country. We came here along with AICC leader, Honorable AICC President Khargeji, under his leadership. As Jairamji already explained, we have submitted one memorandum to Her Excellency, the President of India. Just simply, please help us, save Manipur. All those details will be available in this memorandum. So now, as a citizen of this country, we would like to appeal to the Honorable President and also Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister in particular. They should have to be immediately interfere. Those still burning tents everywhere in the periphery of the hillock, still this firing took place. So please stop this firing and also save from this burning Manipur. So only this much we would like to say, appeal to the Honorable Prime Minister and Home Minister, and also we will rush tomorrow at Imphal, and when Honorable Home Minister is there, we have already sent request letter for meeting Honorable Home Minister and directly apprise all these things. Lastly, from time immemorial, you know, I don't like to take much time. The integrity of Manipur, whomsoever any organization, whether valley-based or whether hill-based, any organization, when any government, when they are trying to resolve once for all permanently, sorry, we cannot compromise our Manipur state's territorial integrity. With this few words, thank you very much, Jairamji, for your kind arrangement. अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष Good morning, everybody. Respected Jairamji,
and respected Bhakta Charan Das ji, our in-charge, and our selfie leader, Sri O Ibobi Singh ji, and Sri Kaikhangam ji, and our Lokeshwar Singh ji, and our Sujay Kumar Honorable MLA, and the Vice President, Sri Harishwar Goswami ji. In fact, it's a very unfortunate that what had happened on the 3rd of May. From that day, Manipur is quite unrest. It's a very really shocking. Till that, not only you see the yesterday only Amit Shah came down to Imphal. Before that, there was nothing at all from the central government as well as from the state government. So a lot of people killing over there in Manipur. Innocent students are killing, girls are killing. Many thousands of houses were burning down. Still it's happening. Cross-firing among the civilians, Kuki and Meiteis, it's happening over there. So where is Sabka Saath, Sabka Vikas? There is no Sabka Saath, Sabka Vikas in Manipur. Where is that? So in fact, we don't get this food, water, and other essential commodities. The entire Manipur is not getting now. The national highway have been blocked by the militants. So, Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh, he already admitted that the happening is due to the failure of the state government, Home Department. And also he stated it is due to the lack of intelligence department of the state government. So he already admitted in front of the public, through press and the media. So what will be the next? What is the responsibility? What is the moral responsibility of the government? Why this? You see, we had happened this thing on 3rd of May. And still continue. Cross-firing, killing, burning. Everything is continue now. So, I just want to know, is it Manipur is under India? Why Prime Minister Modi is keeping silent? Why he is a silent spectator in this juncture of this is a question of our life and property. Why Amit Shah, he's silent? He came only yesterday. So how many days they are a silent spectator? This is happening in our state, Manipur. Since we are border area, and at the same time, it is clash between Kuki and Meitei. No, it's a very serious thing. It is a, so where still you see the whole activities of life, no, the banning of internet, one rocket, everything is happening, and nothing is there. No business activity, no activity of human life. How can we survive over there? ये है, क्या है ये सबका साथ, सबका विकास, सबके प्यार? Is it this of the Prime Minister Sri Narendra Modi ji? No, it's a very surely that we are quite helpless now. We take the attention of we take our help from AICC, and we reach out. We met our Honorable President of India. We highlight all these things. But I don't know how far this BJP government will take care of this thing. It's a question of 1 day, 2 days. It can control by the central government. By the Modi government, it can take only 2 days, 3 days. It's a very small state. No, Manipur is a very small state. It can take over only 2-3 days, hardly. So how? They are taking 1 month time. So after this, burning down the houses, killing the many innocent people, why this, after a long days,
Amit Shah came down to Impal. What is drama of this BJP government? So, for this, we are coming here to Delhi to meet our Honorable President and apprise these things to our AICC leaders. And thanks a lot to the AICC, our leaders, for taking care of us and all the time appealing the peace message to the entire Manipur, to the entire citizens of Manipur, and for the restoration of normalcy. No, we thanks a lot. Thank you for this. We are just thank you for the press and media team also, because so through you only we can highlight this thing to the nation across. So thank you for this covering of all these things. Thank you. अभी गायखान गाम जी आपको संबोधित श्री जयराम जी, श्री बोवी जी, गायखंगम जी, पीसीसी प्रेसिडेंट मेघा जी, and Lokeshwar ji, and my colleagues and dear friends. I have already spoken to you in my first press meet when I came back from Manipur. Now that whole story is open before you. First day I pointed out how the violence happened. मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, इतना कहना है कि अगर चीफ मिनिस्टर चाहते, राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहते, तो 3 और 4 तारीख की घटना से ये हिंसा बंद हो सकता था, लेकिन हिंसा होता रहा, हिंसा को होने दिया गया, पुलिस स्टेशन और बटालियंस की आर्म्स को लूटने दिया गया और हिल में वैली में दोनों तरफ में हिंसा को फैलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम्युनल दंगा फैला करके 1991 से 1990 से देश में कम्युनल दंगा पैदा करके 2 एमपी से आज तक सरकार में बने हैं। इतना 2 एमपी थे तब और आज उतना बने। हिंसा ही इस पार्टी का माध्यम रहा है, लोगों का दिलों को तोड़ना और हिंसा को स्थापित करना, भय और आतंक फैला के लोगों का इमोशन को एक्सप्लॉइट करके चुनाव जीतना, ये उनका माध्यम हर राज्यों में रहा है। ये नई बात नहीं है, लेकिन इतना प्यार से सुंदर से 2 कम्युनिटी के लोग, मैथई लोग और कुकी लोग प्यार से रह रहे थे, उसमें हिंसा सरकार रहते हुए फैला कैसे, क्यों फैला गया, उसका क्या फायदा मिल रहा है? क्या भारत सरकार को या केंद्र राज्य सरकार को इसका फायदा मिल रहा है? आप लोग अगर सवाल करेंगे तो इसका ओरिजिन कहां हुआ, क्यों हुआ, इसको क्यों ऐसा किया जा रहा है? 1 महीना तक होम मिनिस्टर नहीं जाना और होम मिनिस्टर जाने का घोषणा के बाद, होम मिनिस्टर साहब का घोषणा हुआ 3-4 दिन पहले कि वो जा रहे हैं 29 को, और इसका 2 दिन पहले से हिंसा बढ़ गया। तो इतना मिलिट्री फोर्सेस वहां पे है, सरकार के पास इतना आयाम है, बीजेपी पार्टी के कैडर्स एक चुनाव वाली स्टेट में घुस जाते हैं 2000, 5000 और घरों घरों में घुस के लोगों को वोट के लिए मोटिवेट करते हैं, तो जनता को मोटिवेट करने के लिए नहीं जा पाए। अगर पार्टी और सरकार दोनों महत्व देते तो वहां लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की प्रक्रिया कर सकता था सरकार, जो नहीं किया। सरकार प्रोटेक्टेड, हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, नहीं तो हम लोग घुस जाते। हम लोग जाना चाहे, कानकोपी जाना चाहे, हमारे टीम जब गया था मुकुल जी के लीडरशिप में, हम सब लोग जाना चाहे कानकोपी, केवल दिल्ली का टीम को अलाउ कर दीजिए, लोकल टीम को मत कीजिए।
सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस दीजिए, हम जाएंगे कानकोपी, चुराचंदपुर और दूसरी जगह जाएंगे, हम वैली में भी जो कैंप्स है वहां भी जाएंगे, लेकिन हमको लोगों से मिलने नहीं दिया गया। खुद प्रोटेक्शन में तो मिल सकते थे। अगर आज अमित शाह जी जाना चाह रहे हैं, वो जा पाएंगे चुराचंदपुर या कानकोपी, या हमारे कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन नहीं जा पाएंगे, उसको आप कंपैरिजन कर लीजिए, क्यों हमको रोका गया। आप सत्य को छुपाना चाहते हो, इसलिए आपने इसको रोका। और प्रधानमंत्री जी का चुप्पी बता रहा है कि कोई गहरी चाल हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या आप स्टेट को डिवीजन करना चाहते हो? क्या आप स्टेट को विदेशी ताकतों को हैंडओवर कर देना चाहते हो? अरुणाचल में बार बार कांग्रेस पार्टी बात उठाते रही है कि अरुणाचल में चाइना घुस गया है, इतना एरिया में है, रिपीटेडली उठाया है। तो क्या किस तरह की सौदा आप मणिपुर के साथ या देश के साथ करना चाहते हो? मणिपुर आपका भारत का एक भूखंड है कि नहीं? अगर है तो इस तरह की तटस्थता का अप्रोच क्यों? सरकार तटस्थ क्यों है? लोगों का दिल टूट चुका है, वो जुड़ना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को हिंसात्मक किए हो, वो खुद नहीं किए। हिंसात्मक व्यवहार को बंद करो, सत्य को समझने का कोशिश करो, देश की भूखंड को बचाने का काम करो, और विदेश के हाथ में वो भूखंड नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चाइना किसी ना किसी माध्यम से वहां भी ऑक्युपाई कर ले, ये संदेह हो सकता है। तो मैं केवल यही चीज आपको इशारा कर रहा हूं कि देश की जनता इस सवाल को उठाने चाहिए, क्यों सरकार केंद्र में है कि नहीं है, तो क्यों चुप है, क्यों हिंसा होने दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने मणिपुर के नेता और हमारे एआईसीसी प्रभारी से सुना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 15 महीने पहले पिछले साल भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, जनादेश मिला मणिपुर में, और मैं खुद मणिपुर में था 2 महीने के लिए। भक्त चरण दास जी भी थे। और जिन संस्थाओं की आलोचना की जा रही है आज, बार बार मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बातचीत चल रही है, उन्हीं मिलिटेंट ग्रुप के सहायता से बीजेपी को भारी जनादेश मिला। हम लोग सब जानते हैं, जो लोग मणिपुर में थे, कि एक गुप्त तरीके से एक समझौता था इन संस्थाओं के साथ, इन मिलिटेंट आर्म्ड ग्रुप के साथ, और हम देखते रहे। हमने तब भी ये बात उठाई थी इलेक्शन कमीशन के साथ, मैं खुद गया था, हमारी आलोचना हुई। पर आज 15 महीने पहले हम देख रहे हैं कि उन्हीं संस्थाओं के द्वारा जो आपने सहायता ली थी जनादेश प्राप्त करने के लिए, आज आप कह रहे हैं कि वो हिंसा फैला रहे हैं। हो सकता है, तो आज आप कार्रवाई कर रहे हैं, पर 15 महीने पहले उनके साथ आपने समझौता क्यों किया चुनाव जीतने के लिए? तो जैसा कि इबोबी सिंह जी ने कहा कि ये हमारे मणिपुर के नेता कल सुबह वापस जा रहे हैं। इन्होंने गृह मंत्री से गुजारिश की है कि उनसे मुलाकात हो। अभी तक हमें पता नहीं है कि वो मिलेंगे कि नहीं, पर कल पूरा दिन गृह मंत्री रहेंगे इम्फाल में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को 15 साल लगातार, रिकॉर्ड है मणिपुर में, 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं इबोबी सिंह जी, दैखान काम जी भी डिप्टी सीएम रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री कल हमारी गुजारिश को स्वीकारेंगे और इस कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। 1 सेकेंड, आपके कुछ सवाल हैं तो पूछ। यस मैम, 1 by 1। सॉरी,
President in your delegation that went to Madam, meet her. please see the memorandum. If the word President's rule is mentioned there, it is mentioned there. It is not mentioned in the memorandum. Yes, it's not. So what is there in the memorandum is what we stand by. Don't ask me beyond the memorandum. Whatever our demand, we have 12 demands. We have 12 demands. For immediate requirement is to bring peace, normalcy, harmony, reconciliation. All this is mentioned as part of the 12 demands. President's rule is not mentioned anywhere. However, let me say very clearly, the current crisis in Manipur, number one, is the result of the divisive politics of the BJP in Manipur. Number two, the current crisis is a direct result of an intelligence failure, of an administrative failure, and of a political failure. Out of the 10 cookie MLAs, 7 belong to the BJP. Not one belongs to the Congress. They all belong to the BJP. And they are demanding the strictest possible action. So it's worth asking the question. So Yes. the Congress delegation tomorrow has the delegation got an appointment from Amit Shah? Madam, we have requested for an appointment. That request went. Yes, yesterday. We have sent, letters for this permission also. And today morning we have sent through our chief secretary. So I think we hope that we will get this appointment permission, since it's a very sensitive and a very turmoil in the state. Yeah, we will get it, I hope. If they decline, then it is up to them. Jairam ji, Our leaders will be back in Imphal by 10 a.m. tomorrow. So if the Home Minister has the time and the inclination, he can meet the former Chief Minister. 15 years, I keep repeating, 15 consecutive years, not many people. In the Northeast, there are only 2 people with that record. One is the late Tarun Gogoi in Assam, and the other one is Mr. Ibobi Singh in Manipur. So we hope that the Home Minister will meet them. सर आप सारा डेलीगेशन है, आप बता रहे हैं कि मणिपुर किस तरीके से जल रहा है, किस तरीके की परेशानियां हैं वहां पर, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी सरकार के 9 साल हो गए हैं और हमने डेडिकेशन के साथ हिंदुस्तान के हर कोने में विकास और ग्रोथ के लिए काम किया है. नहीं, मैंने कहा है आपको, जब मणिपुर 3 मई से जल रहा है, 3 मई से 30 दिन हो गए, प्रधानमंत्री उन्होंने तोड़ा नहीं, चुप रहे मणिपुर के बारे में. गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा, वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे. और हमारी ओर से रोज बयान आया करते थे, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कहिए. उन्होंने कुछ कहा नहीं. परसों दिन या 4-5 दिन पहले गुवाहाटी गए, फिर वापस आए, तब दबाव बना उन पर कि आप इम्फाल को जाना जरूरी है, तो अभी इम्फाल गए हैं. अच्छी बात है कि इम्फाल गए हैं, अच्छी बात है. आज कल रात को गए, आज रहेंगे, कल रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलेंगे और अन्य नेताओं से भी मिलेंगे, सभी समाज के हर वर्ग से मिलेंगे. क्योंकि जो आज आप मणिपुर में देख रहे हैं, ये बीजेपी की नीयत और बीजेपी की नीतियों का एक नतीजा है. मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे आप प्रशासनिक विफलता मानते हैं गृह मंत्री की, या फिर जानबूझकर किया गया इग्नोरेंस? हाँ, यस, आप बोलिए उसको. ये जो सवाल आपने किया था उसमें ग्रोथ हुआ है 9 साल का. इस 9 साल में आपने देखा है कि हिंसा में कितना ग्रोथ हुआ है. इसका उदाहरण मणिपुर है. महिलाओं के प्रति कितना हिंसा हुआ है, दलितों के प्रति कितना हिंसा हुआ है, किसानों के प्रति कितना हिंसा हुआ है, अनएम्प्लॉयड यूथ के प्रति कितना हिंसा हुआ है. हर अधिकार मांगने वालों के प्रति और आवाज उठाने वालों के प्रति कितना हिंसा हुआ है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था. यही ग्रोथ है, और इस ग्रोथ को देश की जनता नहीं भूले हैं, और कर्नाटक का रिजल्ट इसका जवाब है. और आपने जो कहा वो मैं तो बोल दिया था कि क्यों किया गया.
ये तो 3 तारीख तो रोका जा सकता था। सीएम वहीं पे गए थे 28 को, 27 में जो उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि उनको नहीं बताया लोगों का रिजेंटमेंट कितना है। 3 तारीख को रैली था, पीसफुल रैली हुआ, उसमें कुकी गेट को टच करने का क्या जरूरत था? हिंसा को प्रोवोकेट करने का क्या जरूरत था? और जो कुछ हुआ तो तुरंत उसको नियंत्रण किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? तो अभी तक क्यों बढ़ाते रहे? अगर कर्नाटक चुनाव के बीच में एक दिन हमेशा चले गए होते, एक दिन प्राइम मिनिस्टर चले गए होते, तो मामला नियंत्रित हुआ होता। चुनाव के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी अभी तो चुप रहे, और अभी उनके मौजूदगी में भी हिंसा चल रहा है। तो इसको आप क्या कह सकते हो? ये विलिंगनेस है, विल पावर है टू कंट्रोल, टू डिलीवर पीस? ये विल पावर नहीं है। Due to lack of willpower of state government and central government, this violence is continuing. So it is totally sponsored, man-made. You said that the BJP's divisive politics is responsible for the current situation in Manipur. Now that you wanting to seek a meeting with the Home Minister who's present there, you still have hope in the BJP government, and have you left your demand for imposition of president's rule, which you had initially, sought for? Sanjeev, you were not here when I mentioned that this is the second time in the last 22 years that Manipur is burning. Manipur burnt in June of 2001 when Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister. Manipur is burning in 2023 when Shri Narendra Modi is the Prime Minister. So there is something in the politics and the ideology of the BJP. There is something in the way the BJP manages the diversity of Manipur and other states that is not conducive to social harmony in the long run. Mr. Ibobi Singh ji became Chief Minister of Manipur in February of 2002. 15 years, consecutive years, he was Chief Minister. And he managed the 37 or 38 communities who make up Manipur. 38 communities that make up Manipur. He managed them in a sensitive manner for 15 long years. February 2022, with the help of armed militant groups, the so-called SU groups, suspension of operation groups, the BJP got a huge mandate. They were very much part of the BJP. But the Home Minister is in Imphal. It is our duty to meet the Home Minister. The Congress party has ruled Manipur for a long time, longest serving Chief Minister Ibobi Singh ji. We would be failing in our duty if we don't request for an appointment with the Home Minister. We have requested for an appointment. Now it is up to him to meet. We will give our suggestions. We have given 12 suggestions in our memorandum to the Hon'ble President. We will give those suggestions. Now it is up to them to act. Intelligence failure, administrative failure, political failure. सर, जिस पॉलिटिकल प्रैक्टिस को लेकर आप लोग भाजपा से लड़ रहे हैं, ममता दीदी ठीक वही काम। यार ममता, ये अभी मणिपुर के बारे में पूछो यार, मणिपुर के बारे में पूछो यार, आप लोग क्या, बस हो गया ना मणिपुर के बारे में, और कुछ नहीं। थैंक यू। दस और मार लो, फिर जो बोलोगे ऑर्डर कर दूंगा जोमेटो से। बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस है। जोमेटो नहीं, जोमाटो पे बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है। जोमेटो जोमाटो जोमेटो जोमाटो जोमेटो Zomato, Zomato. Both have 3 lakh plus restaurants. It's better to be known by your failures in my profession
than to be known by your successes. Every intelligence agency's nightmare is that there is a mole. How many of us know that in Kargil, the BSF was manning the heights and not the army? Mr. Morarji Desai, he told Zia-ul Haq, we know about Kahuta. We handed over that tape, Musharraf talking to General Aziz Khan. The Pakistan army finds Kashmir as a useful tool to retain supremacy in Pakistan. 2006, Bombay bomb blasts. We did nothing. 2008, that horror of Mumbai, we did nothing. You know, we've never ever retaliated in the manner that we should have. The message must reach those who take decisions there. Like Balakot would have hurt them because it's the message that is important. Uri was another message that was important. We have the ability to do it, and we will do it, and we will do it again. When this Kargil review committee was going on and coming towards the end, this senior officer comes to me and says, what you're saying is right, but you'll have to take the rap. They're hilarious movies. You only see them as a comedy.